गुड मॉर्निंग सर। सर जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पहली क्लास छूट गई थी टाइम से? पहली क्लास टाइम से छूट गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। तो आई थिंक वी आर रेडी टू गो फॉर द क्लास। कल जो हमने बात किया था, इज दैट ऑल क्लियर और स्टिल देयर इज सम कंफ्यूजन अबाउट दैट? एनी डाउट्स दैट यू हैव? Basically what we have done so far is the free gyroscope, the properties and the behavior of the free gyroscope on the rotating earth at three different locations that we have studied. What we call the tilting and drifting. So tilting is upwards or downwards movement of the spin axis. Where is that? Just 1 second. 1 second. Yes, so if this is the spin axis, upwards or downward movement is the tilting, and in azimuth horizontal plane में जो movement है, that is called drifting. So if this is the meridian से जितना एंगल बनाता है, that is drifting, and horizontal से जितना एंगल बनाता है, that is tilting, happening at the rate of 15 degrees per hour because the earth is rotating at 15 degrees per hour, but at different locations the behavior is different. एक जगह पे tilting maximum होती है, drifting 0. एक जगह पे drifting maximum होती है, tilting 0. That we have seen yesterday. Any confusion about that? Yes, sirs. Any doubt on that? Mandeep, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो कैसे होगा? Guys, are you listening? नो डाउट। Okay. So now that we have understood that, we will take the first step to make the compass. अभी तक हम compass का सीधी बात नहीं कर रहे थे. We were just talking about the rotary motion and the free gyroscope. But this free gyroscope can be converted into a compass where the spin axis is constantly pointing towards the north. We are sailing on the surface of the earth. Any point here sitting, I can go this direction, this or this. So the direction is measured in 360 degrees, as you know. But we need to have a 0 point कि कहाँ से measurement करना शुरू करें. तो latitude measure करते हैं तो equator से, longitude measure करते हैं तो ग्रीनविच ले लिया हमने. ग्रीनविच से imaginary line जो पास है वहां से काउंटिंग करेंगे ईस्ट एंड वेस्ट. For direction we have the true north. True north से जो मेरिडियन है उससे हम मेजर करते हैं कि मेरिडियन से हम किधर जा रहे हैं. So a compass should do three things. A gyro compass should perform three functions. Number one, the spin axis should always remain horizontal. अर्थ पे यहाँ पे है तो horizontal यहाँ पे है, तो जहां पे भी रहे, कहीं पे भी रहे, the spin axis should always remain horizontal. Number two, it should always be pointing to north. It should always be aligned to north. अगर यहाँ पे है तो okay. It should always be horizontal. Number one, यहाँ पे है तो horizontal में दिख रहा है. यहाँ पे रहे, कहीं पे भी रहे, it should remain horizontal all the time. इसके horizontal, यहाँ horizontal. Number one, it should always be sorry, aligned to meridian. यहाँ रहे तो sorry, always should align with the meridian. Third thing, that if by any chance if it is disturbed,
then it should come back pointing to north. Three functions: horizontal, aligned with meridian, and if disturbed in any way, it should come back to pointing to north. सर हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू अर्थ बोलो ना. Come again. Parallel to हॉरिजॉन्टल टू अर्थ मतलब पैरेलल टू अर्थ रहा ना, जो उसका हमेशा exactly. अभी मैंने इसको जमीन ऐसे है मेरे नीचे, तो ये पैरेलल है, ये टिल्टेड है, ये डाउनवर्ड टिल्टेड है, ये अपवर्ड टिल्टेड है. टिल्टिंग नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, पैरेलल टू द ग्राउंड. ओके सर, थैंक यू. Right. So three functions. So now what we do, we take the first step in making this free gyroscope. Was this free gyroscope behaving in this manner? जो three requirement है, इसमें कुछ भी manage कर रहा था ये? Was it horizontal all the time? अगर हमने free gyroscope को घुमा के छोड़ दिया, तो was it remaining horizontal all the time? Yes sir. Why yes sir? नहीं सर, वो tilt हो रही थी, so क्या हो रहा था? नहीं, वो तो टिल्ट हो रहा था. अर्थ की रोटेशन के साथ चेंज हो रहा था, या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. हमने कल देखा कि टिल्टिंग हो रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है. साइक्लिक मोशन है, 24 घंटे में इधर से उधर घूमता रहता है. तो इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल. इट इज ऑल्सो नॉट अलाइंड विद द मेरिडियन, क्योंकि ड्रिफ्टिंग हो रही है तो मेरिडियन से दूर जाता रहता है, फिर घूम के वापस उसी मेरिडियन पे आता है. सो इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, इट इज नॉट अलाइंड विद द मेरिडियन, एंड इफ डिस्टर्ब के तो बात ही छोड़ दो, ये तो खुद ही डिस्टर्ब है, इधर उधर घूमता रहता है. वापस कहाँ आएगा, ये तो खुद ही घूमता रहता है. So none of this was happening so far. So the next topic that we are dealing with is making the free gyroscope into north seeking gyroscope. North seeking. What is the meaning of seeking? Gaurav, what do you mean by seeking something? Gaurav. Amit Pal. Gaurav not responding. Amit Pal. Mudassir. Are you guys listening to me? यस सर. Yes sir. Yes, sir. कोई जवाब क्यों नहीं देता भाई? मुदस्सिर नहीं दे रहा, गौरव से पूछा, अमित पाल ने. कहाँ हो भाई? लॉग इन करके कहीं चले जाते हैं? सर एक्सटेंडेड ब्रेक ले लगता है. ओके, चलो छोड़ो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीकिंग? सीक करना मतलब क्या करना बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीकिंग? टू लुक फॉर, टू फाइंड, Find something, sir. टू कीप फाइंडिंग द नॉर्थ. To try to find out. So the spin axis which was going about this in a circular path in 24 hours, we want it to come back to looking for north. So in order to do that, we are going to use the inherent property of the free gyroscope, that is number 1, rigidity in space, number 2, the precession that it shows, and number 3, earth gravity. ये तीन चीजों. पूरा बोर्ड दिख रहा है अभी? Yes sir, दिख रहा है. Yes, sir. Right. So we are taking the side look of the rotor, in which we have the rotor like this. This is the spin axis. और पूरा ही देख लेते हैं. This is the rotor, the spin axis. Now what is done? This whole assembly is enclosed in a casing. So here is the rotor. This is the spin axis. This spin axis is mounted with ball bearings.
so as to reduce the friction. This is, let us say, the south north end. This is the south end because we are looking at from the side view. So which side we are standing? If this is north, this is south, then which side we are standing? East. I would say. Very good. We are standing on the east side of the compass. This is the initial condition. It is horizontal. It is also aligned to meridian. That means अभी aligned है, north की तरफ pointed है. Horizontal and aligned. It is at some intermediate latitude. We are not going to poles. We are not talking about right now at equator. We are talking about some intermediate latitude. It is like this. In this condition, what we do further is that we place a weight on top of the rotor casing. Rotor casing नहीं घूम रहा, rotor casing के भीतर rotor घूम रहा है. So it is like this. Rotor is rotating, but the casing is fixed. इसके भीतर में घूम रहा है. This is called control weight. The placement of the weight is such that the weight is acting vertically downwards in this direction, which is passing through the dead center of the spin axis. मतलब रोटर के भी बीच में, spin axis के भी बीच में. How do I want to show you? So you are looking at the side view of this. आपको पुराने दिख रहा है, थोड़ा tilt कर देता हूं मैं. रोटर केसिंग इज हेयर. ऊपर में वेट रखा हुआ है. वेट ऐसा है कि डायरेक्टली थ्रू द सेंटर ऑफ द रोटर इट इज पासिंग, इसके सेंटर से और स्पिन एक्सिस के भी सेंटर से. सो इट इज वर्किंग डायरेक्टली डाउनवर्ड्स. When it is horizontal, it is the condition that it is working through the force of gravity which is pulling it down, or the weight acting downwards is passing through the dead center. Now this weight, is it creating any turning moment or other way called torque? Is it creating any torque so as to move the spin axis? So center पे No, लगेगा तो torque नहीं होगा ना. Very good. That's what I wanted to hear. Since it is working in the center, जैसे दरवाजा खोलने के लिए अगर हम उसके कब्जे पे जोर लगाएंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि दरवाजे को मोमेंट नहीं मिल रहा है. For that, to make something rotate, the force has to be applied at a distance away from the center. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So right now there is no turning force. Why? Because it is horizontal. It is aligned to meridian. तो वहीं पे रहेगा. Intermediate latitude पे है कहीं पे. So nothing is happening. But 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद will this condition remain so or will it change? ऐसा ही रहेगा या कुछ चेंज होगी इसमें? अगर हमने घुमा के हाई आरपीएम पे छोड़ दिया, रिजिडिटी है, will it remain like this or will there be change in the condition of this setup? Let us say intermediate latitude, we are in north hemisphere. So what is expected? So change होगा sir. जैसे Change, आप rotate कर. Move up. Yes, Very sir. good. There will be change. So what kind of change is expected? Since we are in northern hemisphere, intermediate latitude, what is expected? It Sir, will ऊपर की तरफ sir. Tilt upward. Tilting होगी ऊपर के तरफ और drifting भी होगी क्या? Yes, sir. Drifting east. Very good. So this condition is now, पहले बना लीजिए ये diagram.
थोड़ा सा मतलब आइडिया ले लीजिए, क्योंकि उसको इधर में बना, और नहीं तो चलो ऐसे ही बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद नॉर्थ एंड विल मूव अप बिकॉज वी आर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। कल देखा था हमने, साउथ में नीचे की तरफ होता है, नॉर्थ में ऊपर की तरफ जाता है। सो इट इज नाउ लाइक दिस। The weight is still on top of the casing. Because of the rigidity, it has tilted upwards. It has also moved towards eastward. So the spin axis has come towards you because you are standing on the east side. So spin axis आपकी तरफ आया है और जमीन से ऊपर भी गया. Now in this case, the weight which was acting vertically downwards will still be working vertically downwards. Force will be acting down like this. Now this weight, is it through the dead center or at a distance away from the center? Distance away, sir. Distance That away. That means it is creating a torque which is F into D. Mass force will be mg, mass into gravity, which is the torque being applied, and this is being applied in a vertical plane. Gravity downwards काम करती है. Correct? Yes, So sir. it is now creating a torque. So what is happening? हमने इसको अलाइन किया था, हॉरिजॉन्टल रखा था और अलाइन किया था मेरिडियन से आप हमारे नॉर्थ में मान लीजिए. So after some time it has tilted up and it has moved towards east. आपकी तरफ ईस्ट जा रहा है या वेस्ट जा रहा है? मैं इधर ईस्ट कर रहा हूँ तो आपका वेस्ट जा रहा होगा. लेट्स से ठीक है, तो इस तरफ करते हैं. ये आपकी तरफ ईस्ट को चला गया और अपवर्ड्स टिल्टिंग हुई. ये वेट जो शिफ्ट हो गया, so weight is now acting at a distance away from the center. Is that correct? Yes, sir. Is this acting vertically downwards? Yes, sir. Is it acting in on the south end of the spin axis? Yes, sir. Yes, sir. So what Yes. is expected? अगर एक टॉर्क अप्लाई करते हैं स्पिन एक्सिस पे, स्पिन एक्सिस को घुमाने की कोशिश करते हैं, एक टॉर्क लगाते हैं, तो व्हाट शुड बी द रिजल्ट? Tilt हो जाएगा सर. Sir, precision. प्रोपोर्शनल 90 डिग्री प्रोपोर्शनल घूमना स्टार्ट कर देगा. 90 डिग्री. जितना टॉर्क लगा उसके रेस्पेक्ट में यू मूवमेंट होगी, क्योंकि टॉर्क यू लगी है तो उसका प्रिसेशन होगा इस तरफ को या इस तरफ को, डिपेंडिंग ऑन Rotation of the wheel. rotation. So this time since it was going eastward, east, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ. मैं अपनी तरफ से दिखाता हूँ, आप लोग रिलेट करते रहिएगा. Since it is going eastward, upward, south end पे टॉर्क लगी. So what we want as a compass, this to go further east or come back towards north? West. Come towards the north. Come towards the north. So rotation should be such that the precession takes it towards the meridian again. And in this case, where the weight is put on the top, the rotation should be counterclockwise or anti-clockwise as seen from the south end. अगर आप साउथ एंड पे खड़े होकर देख रहे हैं तो रोटेशन ऑफ द रोटर शुड बी, अगर मैं साउथ में हूं, आप हमारे नॉर्थ है, इफ आई एम लुकिंग, इट शुड बी रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज. So what happens as the tilting is there, which is due to rotary motion of the earth, because of the rigidity there is tilting happening, there is drifting happening. जैसे ही टिल्ट होता है वेट शिफ्ट होता है, टॉर्क लगती है,
टॉर्क लगती है साउथ एंड पे तो स्पिन एक्सिस जो है मेरिडियन की तरफ जाता है, लेकिन टिल्टेड था और टिल्टेड कंडीशन में है तो वो मेरिडियन पे आके भी टिल्टेड रहता है थोड़ा, और उस टिल्टिंग के चलते टॉर्क लगती रहती है, वो वेस्ट की तरफ चला जाता है, मेरिडियन को पास करके वेस्ट की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाता है टिल्टिंग कम होनी शुरू होती, टॉर्क लगना कम शुरू होती। एक टाइम आता है जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, नो टॉर्क। अब आर्क तो कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है और ड्रिफ्टिंग का फोर्स लग रहा है कंटिन्यूस। Westward movement is happening only when the precession which is being caused is becoming more than the drifting force, depending on the rotation, mass, etc., etc., and the weight, because the force being applied, the torque being applied is by the mass, which is put on the top, mg. So depending on the weight, how much of torque is applied, that can be controlled. कम लगाया तो कम टॉर्क लगेगी, ज्यादा रखा तो ज्यादा टॉर्क लगेगी, जल्दी स्विंग कर जाएगा, थोड़ा सा टिल्टिंग होते ही घूम जाएगा, हल्का लगाया तो दूर तक जाएगा, ज्यादा टिल्टिंग चाहिए तब टॉर्क लगेगा, तब होएगा. So at one point of time the precession due to this control weight becomes more than the drifting of the gyro compass. Drifting is happening because of rigidity. Then it comes back to meridian, but tilted still, it goes towards west. अगर वेस्ट में स्पिन एक्सिस था तो सॉरी मेरिडियन से इधर को जाते हैं तो अपवर्ड्स होता है, अगर पहले ही हमने इधर रखा है तो अर्थ के मूवमेंट के चलते टिल्टिंग विल बी डाउनवर्ड्स. मेरिडियन से इस तरफ को टिल्टिंग अपवर्ड्स हो रही थी, अगर हमने वेस्ट में रखा है तो टिल्टिंग विल हैपन डाउनवर्ड्स. तो जैसे वेस्ट में जाता है टिल्टिंग कम होनी शुरू होती है, एक टाइम पे हॉरिजॉन्टल हो जाता है. ड्रिफ्टिंग का केस चल ही रहा है, रिजिडिटी वाली चल ही रही है, सो वो ड्रिफ्टिंग के चलते वो फिर से इधर को आना शुरू होता है, मेरिडियन पे आता है. अगेन अर्थ इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग, इट विल अगेन गो टू द ईस्ट, फिर से टिल्टिंग होगी, टॉर्क लगेगा, फिर से वापस आएगा. And this action will continue to happen again and again, again and again, again and again. So the spin axis, which was going all over the world in 24 hours, जो इधर से उधर से घूम के आता था, चाहे ऐसे चाहे जैसे भी घूम रहा हो. Now what is happening? जैसे ही थोड़ा सा टिल्टिंग होती है, एक टॉर्क लग जाता है, वापस इस तरफ आता है. So this is happening constantly. The circular path of the spin axis is now converted into an elliptical path about the meridian as the center. Meridian के आसपास में भटकने लगता है वो. अब 24 घंटे में घूम करके वापस नहीं आएगा इस. अब जैसे ही थोड़ा सा दूर जाता है, एक रस्सी पकड़ के उसको खींच लेता है वापस इस तरफ, लेकिन थोड़ा जब रस्सी जोर से हो जाती है तो इधर को. So now this is north seeking gyro compass. Why? Because the spin axis is trying to look for the meridian. It is not settled with the meridian, it is looking for the meridian. आरती उतारने लगता है ऐसे आसपास. So as we have seen that this control weight is creating a torque which we will call the control torque, and it causes the spin axis to move towards the west, and that precession we are going to call control precession, PC. सर ये कंट्रोल वेट से मतलब क्या हुआ सर, ये समझ नहीं आया. अरे सारी कहानी तो खत्म हो गई. हमने क्या क्या किया, कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कीजिए. व्हाट हैव यू सीन हियर? अभी उधर छोड़ दीजिए, इसको बताइए क्या क्या चीज किया आपने. नहीं सर बाकी सर समझ आ गया, लेकिन ये कंट्रोल वेट क्यों, ओनली वेट क्यों नहीं बोल रहे, कंट्रोल वेट क्यों बोल रहे हैं सर उसे? क्योंकि यही कंट्रोल कर रहा है ना.
स्पिन एक्सिस को वापस लेके कौन आया? वेट ही था सर, बट कंट्रोल कर रहा है इसलिए कंट्रोल वेट बोल रहे हैं क्या? Yes, of course, it was free gyroscope. Now it is controlled gyroscope or not? यस सर। तो कंट्रोल किसने किया? वेट ने किया। यस सर। तो इज इट लॉजिकल टू कॉल इट कंट्रोल वेट? वही तो करता है। कंट्रोल कौन करता है जायरोस्कोप? अच्छा, मतलब जस्ट लॉजिक ये है कि उसको कंट्रोल कर रहा है इसलिए उसका नाम कंट्रोल वेट डाल दिया। एग्जैक्ट। नाउ दिस वन इज ग्रेविटी कंट्रोल्ड नॉर्थ सीकिंग जायरो कंपास। इस सिस्टम को जो आपने बोर्ड पे देखा, इट इज टर्म्ड एज ग्रेविटी कंट्रोल्ड नॉर्थ सीकिंग जायरो कंपास। बट ग्रेविटी के साथ मिलके काम कौन करता है? वो वेट करता है, इसलिए कंट्रोल वेट उसको बोलते हैं। ऑलराइट? यस सर। जब कंट्रोल वेट एक्ट करता है तो टॉर्क लगाता है, तो उसको भी कंट्रोल टॉर्क है। वही टॉर्क है जो इसको वापस लेके जाता है, तो इसलिए हम उस टॉर्क को जो उस वेट से लगता है उसको कंट्रोल टॉर्क बोलते हैं। जब कंट्रोल टॉर्क लगती है तो प्रिसेशन होती है जो उसको वापस मेरिडियन की तरफ लेके जाता है, इसलिए उसको कंट्रोल प्रिसेशन बोलते हैं। जो ड्रिफ्टिंग था उसके अगेंस्ट में कंट्रोल प्रिसेशन आती है। ड्रिफ्टिंग ईस्टवर्ड जा रहा था, कंट्रोल प्रिसेशन उसको वापस मेरिडियन की तरफ लेके आता है। So in this there is a cycle of elliptical path. The spin axis starts tracing an elliptical path about the meridian. It goes from the meridian, it goes east. एक टाइम के बाद टिल्टिंग होने लगती है तो टॉर्क लगता है, वो वापस मेरिडियन की तरफ आता है। टिल्टेड रहता है इसलिए और उधर को चला जाता है, फिर वापस नीचे को आता है, and then it keeps on happening. This is not okay. How much time should it take for one cycle of the elliptical path? अगर वो एक बार ऐसे घुमा तो आप बताइए अंदाजा से और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, how much time should it take with only comparison with 24 hours? Will it be 24 hours or less or more? इतना thinking. If you have understood, you can answer that. इलेप्टिकल पाथ में भी सर सेम ही रहेगा टाइम, क्योंकि अगर एक साइड टाइम कम लेगा तो दूसरी साइड ज्यादा लेगा, तो ओवरऑल टाइम सेम ही रहेगा। That means, are you saying 24 hours? यस सर। Okay. टिल्टिंग होने में कितना टाइम लगा? अगर हॉरिजॉन्टल रखा था अर्थ के रोटेशन के साथ, जो ड्रिफ्टिंग हुई और टिल्टिंग हुई, कितना टाइम लगा? सर वो तो 15 डिग्री के हिसाब से लगेगा ना सर। और लैटिट्यूड के हिसाब से लगेगा, करेक्ट। लेकिन जैसे ही राइट सर। मान लो 1 घंटा भी मान ले, तो 1 घंटे में टिल्टिंग हो गई तो टॉर्क लग गया ना। यस सर। वापस जाएगा 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे में वापस जाना शुरू कर देगा। यस सर। सवा 1.5 घंटे में वापस इस तरफ को जाके वापस भी आएगा। कहाँ गया 24 घंटे? क्योंकि जैसे ही वो हिलना शुरू होता है कंट्रोल प्रिसेशन खींच लेता है उसको। द वेट इज केप्ट इन सच ए मैनर, इतना टॉर्क लगाते हैं कि इस एलिप्टिकल पाथ का टाइम पीरियड में वैरी बिटवीन 80 to 120 मिनट्स। एलिप्टिकल साइकिल जो है ये आरती उतारने वाला एक चक्कर टाइम है, that normally is anything between 80 minutes to 120 minutes. 2 घंटे के भीतर में एक चक्कर लगा लेते एलिप्टिकल पाथ। अगर फ्री जायरोस्कोप था तो ऐसे जाकर के वापस आता है, एंड दैट इज 24 hours. बट सिंस नाउ इट इज कंट्रोल, जैसे ही वो थोड़ा सा हटता है वापस खींच लेते हैं कंट्रोल।
So spheric compasses, which used to be quite popular, अभी तो बहुत सारे compasses हैं. So spheric compasses have a time period of oscillation which is 84.5 minutes. 84.5 minutes. So this is what we have understood is the gravity control north seeking gyro compass. Where is the weight placed here? Is it on top of the rotor? Yes, Is it? Yes, sir. Okay. So this one is called इसको मैं कहाँ लिखा छोटा सा gravity controlled north seeking gyro compass. Since it is placed on top of this, we may also call it top heavy. हमने weight ऊपर रखा है. So this particular setup is called top heavy gravity controlled north seeking gyro compass. Why we are differentiating with top heavy? Because the same thing can be done by placing a weight at the bottom. So this is the case. अभी ये नीचे की तरफ काम कर रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली जो फोर्स लग रही है सेंटर में इसको नीचे खींच रहा है. पहले ऊपर से दबा रहा था, अब ये वेट इसको नीचे से खींच रहा है, बट अगेन वर्किंग डायरेक्टली थ्रू द सेंटर. But what will happen when it is tilted? Again, not condition में हम रख रहे हैं. So since it is tilted, the weight is acting here, which is still acting downwards. So will it not be like this? क्योंकि ये शिफ्ट हो गया इधर को, तो इस एंड को इधर खींचने को देखेगा कि नहीं है? Yes, sir. yes, sir. That means जो पहले टॉर्क यहाँ साउथ एंड पे ऊपर से लग रही थी, जो साउथ एंड पे ऊपर से लग रही थी, अब यहाँ पे इस तरफ को लग रहा है. दैट मीन्स दूसरे नॉर्थ एंड को नीचे दबा रहा है. पहले साउथ एंड को दबा रहे थे टॉप हेवी से, अब नॉर्थ एंड को नीचे दबा रहे हैं. टॉर्क दूसरी तरफ लग रहा है, वर्टिकल ही लग रहा है लेकिन दूसरी तरफ. व्हाट शुड बी चेंजिंग? वेट जो ऊपर से नीचे हो गया, इसके साथ अब आपको प्रेसेशन फिर से वेस्ट चाहिए. टॉर्क बदल दिया तो प्रेसेशन बदली होनी चाहिए. प्रेसेशन आपको वही पुराना चाहिए, जो ईस्ट में गई थी तो आपको वेस्ट में लेके जाना है. तो इन दिस सिनेरियो व्हाट शुड चेंज in order to achieve that north seeking property? Sir, direction Clockwise of rotation clockwise होगा south से. Great, bingo, well done. So the rotation of the rotor as seen from the south end for a bottom heavy north seeking gyro compass is clockwise, seeing from south end. पहले ये एंटी क्लॉकवाइज था टॉप हेवी में, बॉटम हेवी में क्लॉकवाइज होगा. So that both of these setup give us the same precession. ईस्ट में ड्रिफ्ट हो रहा था तो कंट्रोल प्रेसेशन उसको वेस्ट की तरफ लेके जाएगा, टुवर्ड्स द मेरिडियन लेके. So gravity control can be of how many types? Top and bottom heavy. टॉप हेवी एंड बॉटम हेवी. द डिफरेंस, एक में वेट ऊपर होती है, दूसरे में नीचे होती है. दूसरा चेंज, रोटेशन ऑफ द रोटर इज एंटी क्लॉकवाइज इन टॉप हेवी एंड बॉटम हेवी में दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन एज सीन फ्रॉम द साउथ एंड, नॉट फ्रॉम द नॉर्थ एंड. So have we understood what is gravity controlled north seeking gyro compass? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Now there is the rotor, red one, and my hand is the rotor casing. The weight was kept here or at the bottom. जहाज चलती है तो रोलिंग पिचिंग होता है. जब रोलिंग पिचिंग हुई तो इस कंडीशन में अपने आप में ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जहाज के साथ जब ये यू होगा तो कंट्रोल टॉर्क लगती दिख रही है आपको. Yes. अगर इस तरफ को झुका तो कंट्रोल टॉर्क टॉप हैवी मान लेते हैं, तो कंट्रोल टॉर्क लगता हुआ दिखा. Yes, sir. That means when the ship is rolling, ये solid weight जो है it is still going to create control precession. वो जैसे झुकेगा एक तरफ तो weight although अपने आप में horizontal था वो, लेकिन चूंकि जहाज ही हिल गई है, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे टेढ़ा हो गया, तो weight तो हमेशा ग्रेविटी नीचे काम करेगा. तो इस केस में जो solid weight लगाया हमने, जो weight ऊपर में या नीचे में लगाया, that produces the control precession because of the rolling of the ship as well. तो अगर ये लगता है control precession because of the rolling, तो spin axis नाचना शुरू करेगा. इधर को गई तो इधर को लेगा, इधर को गई तो इधर लेगा. So अपना जो इलेप्टिकल पाथ है स्टैंडर्ड वो तो है, उसके साथ साथ प्लस माइनस होता रहता है ड्यू टू रोलिंग ऑफ द शिप ऑल्सो. So this design with the solid weight is good for understanding, but it is subjected to an error called rolling error. Because of the rolling error, the the gyro compass keeps on wandering here and there, here and there. कभी इधर को ज्यादा चला जाता है, कभी इधर को कम होएगा, कुछ ऐसा होता है. But we want as a compass it to be steady and pointing to north all the time. Whether जहाज अगर रोल भी कर रहा है तो भी वो तो भाई नॉर्थ की तरफ रहे. So now we are going to improve this design. We are going to improve this design so as to make it more reliable, to try to eliminate or minimize the effects of rolling of the ship. The action will be same, the concept will be same, but now we are going to use liquid weight, not solid weight, but liquid weight. पानी का भी तो weight होता है ना, liquid का भी weight है. So this is solid weight top heavy and bottom heavy scenario. अब तो ये यहाँ पे top की जगह bottom आप देख रहे हैं. But as we said, in the real life, this is not very practical because of the constant movement of the ship. So we need to improvise this design so that it is less susceptible to disturbances because of the rolling pitching of the ship. Concept यही रहेगा, but we now improvise it. So what we are going to talk about is gravity control using liquid LIQUID, liquid ballastics. Ballast क्या होता है? What is ballast? It's a tank containing water. पानी होता है सर, पानी होता है. Water only. Ballast is added weight for balancing. It can be solid, it can be liquid, it can be different type of solid, it can be different type of liquid. हवाई जहाज में भी अगर नोज हेवी हो गया तो टेल पे वेट रख देते हैं थोड़ा, ताकि स्टेबिलिटी बने. अगर टेल हेवी है तो सामने की तरफ वेट रख देते हैं, नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी बने. So ballast is added weight for stability. That is why we are calling here also we are going to use liquid, and that is ballast
what we call the liquid ballistics. What is changing in the design? We still have the same rotor casing. We still have the rotor, the spin axis, everything same. Now what we do here, not placing the weight on top or bottom, we have two reservoirs or cups which is aligned with the spin axis, north south एंड पे, ईस्ट वेस्ट में नहीं. मतलब अगर ये स्पिन एक्सिस है तो एक यहाँ पे और एक इस पे, नॉर्थ साउथ में, aligned with the spin axis. One reservoir here, one reservoir here. These two reservoirs are interconnected with a narrow bore tube. पतली सी ट्यूब से कनेक्टेड होता है, and the whole thing is also installed with the rotor casing. मतलब ये असेंबली जो है वो रोटर केसिंग के साथ लगा हुआ है. So we don't have the weight here. Now we have these two reservoirs. Actually चार होते हैं, but उसको छोड़ दीजिए. These reservoirs, the cups, are filled with liquid. Since they are connected, so liquid इसमें भरी होगी और इन दोनों का लिक्विड का लेवल एक ही होगा because of the gravity. Is it making sense? अभी तक डिजाइन में कोई फ्लॉ तो नहीं दिख रहा? सर ये बॉटम में स्पिन एक्सिस से कनेक्टेड है, उसका क्या सेंस है? बेसिकली स्पिन एक्सिस से कनेक्टेड नहीं है, वो केसिंग से कनेक्टेड है. केसिंग ऐसे थी, केसिंग ऐसे थी, तो भीतर में रोटेशन तो हो रही है, लेकिन ये जो रिजर्वायर है वो यहाँ से कनेक्टेड है. मतलब जब ये टेढ़ा होगा तो कप्स भी टेढ़े होंगे. ओके सर. सो ये नॉन मूविंग पार्ट है, ये वाला जो केसिंग है, दैट इज नॉन मूविंग पार्ट. दिस वन इज रोटेटिंग, यस, बट दिस इज स्टेशनरी, और इस स्टेशनरी चीज के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है ताकि जब ये चेंज हो तो साथ में कप भी चेंज हो. अगेन वी आर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर फॉर एग्जांपल, जो अभी देखा था थोड़ी देर पहले. Along with that, what we see that after some time, there will be tilting and drifting. So the rotor will become like this. It will be like this. The cups, since they are connected with each other, they will also be like this. Since they are connected with each other, will this condition develop or not? लिक्विड दोनों में बराबर थी, दोनों का लेवल एक ही था. जब ये कंडीशन डेवलप होगी तो ये लिक्विड का लेवल बराबर होना चाहेगा या नहीं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. इधर की लिक्विड इधर फ्लो करेगी या नहीं? यस सर. Yes, sir. That means the liquid here has reduced and this side has become heavy. तो टॉर्क इस तरफ को वापस लग गई या नहीं? Yes. When this was the condition, इसका center of gravity was such that it was acting, पूरे system का CG was here, it was right through the center. But now that it has tilted, liquid has shifted here. So the center of gravity of this system has shifted away, which will try to pull it down. यस सर. साउथ एंड पे टॉर्क लग गई, वर्टिकल टॉर्क लगी बिकॉज ऑफ लिक्विड शिफ्ट, एंड देयर यू हैव ग्रेविटी कंट्रोल यूजिंग liquid ballistics. This liquid is mercury because of its high density. Because of high density, the liquid does not shift immediately like this. वो धीरे 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 आता है. ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, टिल्टिंग हो रही है 15 डिग्री पर आवर.
So slowly it is rising up. Liquid is also slowly transferring here. Slowly the control weight is applied. Slowly it goes towards the meridian. सब कुछ धीरे-धीरे होता है. Now in this case, if you see the reservoirs are like this, because of high density, if the ship is rolling, liquid begins to go here. अभी weight shift होना होगा. Liquid is going to go to the other side. Time लग रहा है, तब तक जहाज सीधा. अभी गया नहीं था, टॉर्क लगी नहीं थी, जहाज सीधा हो गया. तब तक जहाज दूसरी तरफ गया. अब लिक्विड इधर से धीरे धीरे, चूंकि नैरो बोर है, डेंसिटी भी ज्यादा है, तो उधर से जब इधर को शिफ्ट हुई, जब लिक्विड जाना शुरू होगा, धीरे धीरे अभी लगेगा, जाएगा, टॉर्क लगेगी, उसके पहले जहाज सीधा. तो ये वेट शिफ्ट नहीं होता उतना. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ क्विक मोशन ऑफ द रोलिंग. देयर इज नो टॉर्क बीइंग अप्लाइड. जबकि सॉलिड वेट में इधर गया तो लग गया, इधर गया तो लग गया. यहाँ पे वो नहीं होता. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे मेंटेन रहती है बिकॉज द शिप इज रोलिंग एंड पिचिंग एट ए फास्टर पेस. उसको ये लिक्विड फॉलो नहीं करता. लिक्विड आराम से काम करता है, इस बीच में जहाज डांस करती रहती है, इसको फर्क नहीं पड़ता. So the liquid ballastics takes care of the rolling error. Are we good? Yes, sir. Okay. Yes. Now open your notes and read through this, the whole of the subject that topic that we have discussed. Open the notes. You have 10 minutes. Review this honestly. Just go through this topic. ऊपर से नीचे, या तो क्वेश्चन आंसर में, या हाँ क्वेश्चन आंसर वाला पढ़ लीजिए, उससे भी समझ में आएगा. सारी चीजें एक्सप्लेन है उसमें भी, क्वेश्चन के फॉर्म में और आंसर की फॉर्म में है. तो जस्ट गो थ्रू दिस. आई एम सिटिंग हियर ओनली. एक्सक्यूज मी सर, जून बैच को आपने भेजे नहीं है सर नोट्स. नीचे में है. अगर इसको रिजर्वायर्स को ऊपर कर दे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा. सो इन दिस केस आल्सो वी कैन मेक इट टॉप हेवी और बॉटम हेवी डिपेंडिंग ऑन वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज. अगर रोटर ये है, हमने लिक्विड्स को यहाँ इसके लेवल में रखा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगी. इसको ऊपर कर दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चल जाएगी. तो ऊपर गई तो इधर को लगा, नीचे गई तो इधर को लगेगा. आई समझ में बात या नहीं? हाँ जी सर. पक्की बात? नहीं तो बोर्ड पे बताऊं? बताओ. ठीक है सर. ठीक है या नहीं ठीक है, क्या बोले? ठीक है सर. As we have placed it here, the center of gravity is somewhere at this place. कुछ यहाँ पे है. अगर हमने सिस्टम को यहाँ पे लगा दिया ऐसे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे चला जाएगा या नहीं? तो एक्सिस से नीचे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो एक इफेक्ट, यहाँ पे है तो दूसरा इफेक्ट. इन दिस केस अगर ये वाला चीज है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल स्टार्ट एक्टिंग दिस वे, और अगर नीचे वाली केस है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल स्टार्ट पुलिंग दिस साइड. नहीं समझ में आया? कोई कुछ बोलेगा? नहीं सर, ये नहीं समझ यू सर. नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे आएगा, एक बार फिर से बताइए. इस सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होना चाहिए? लिक्विड इतना भरा हुआ है दोनों सर पे. नीचे होना चाहिए सेंटर में. यहाँ पे आएगा? नहीं सर, ऊपर ऊपर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे आएगा या नहीं? हाँ सर, ठीक. अगर हमने रोटर को यू लगाया है तो ये एक्सिस से नीचे आ रहा है या नहीं? यस सर. तो बॉटम हेवी हो गया या नहीं? अगर हमने रोटर को कुछ इस तरीके से लगाया है, इसका ट्यूब थोड़ा सा लंबा कर दिया,
अगर इस तरीके से लगाया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वही रहेगा, लेकिन अब ये टॉप हेवी हो गया कि नहीं, वेट जो है वो ऊपर में है या नहीं? हाँ सर टॉप हेवी। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसको ऊपर या नीचे कर दिया, उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर एक्सिस से ऊपर या एक्सिस से नीचे हो जाएगी। यस। समझ में आ गया? हाँ बाकी वो टॉप हेवी और बॉटम हेवी वाला तो कॉन्सेप्ट। यही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वेट हो गया ना, इस सिस्टम का वेट यहाँ काम कर रहा हाँ है, सर। यही शिफ्ट होता है इधर, यही शिफ्ट होता है इधर। यस। तो अगर टॉप में है तो टॉप इधर शिफ्ट होगा, या बॉटम है वो इधर को शिफ्ट होगा। अगर तिरछी हुई तो अगर टॉप हेवी था, weight was here, then if shifted this will act downwards here. If it was here, when shifted it will pull it down this side, तो टॉर्क उल्टे साइड में लगेगी। तो इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किया जा सकता है। इट कैन बी मेड टॉप हेवी बॉटम हेवी एज वेल। ऑलराइट, क्लियर? यस। ऑलराइट, सो 5 मिनट बच गए हैं। we'll just quickly review through the slide. ओके, तो ये कल हमने टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग समझ लिया था। FGS ऑन रोटेटिंग अर्थ भी हमने देख लिया था। ओके ओके, ये फॉर्मूला भी देख लिया था हमने। अच्छा, कल कोई कह रहे थे लिखवाने के लिए या ये क्या, तो एक बार पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। ऑलराइट, ये देख लिया। हाँ, जस्ट गो थ्रू इट, नहीं तो आगे अगले क्लास में पूरी करा देंगे, अभी देख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, somebody please explain what is it saying? सर नॉर्थ पे और नॉर्थ पोल सेलेस्टियल नॉर्थ को स्पिन एक्सिस पॉइंट कर रहा था, तो वो कोई ड्रिफ्ट नहीं, क्योंकि वो तो तो ये एक्सिस। सेलेस्टियल पोल क्या है? सेलेस्टियल नॉर्थ पोल क्या है? सर वो जब बड़ी ऐसी जब भाषा में बताइए जो बच्चे को समझ में आ जाए। सर जहाँ पे अर्थ का स्पिन एक्सिस वो सेलेस्टियल स्फीयर को कट करता है, फिर वो लंबी चौड़ी सेलेस्टियल बात नॉर्थ। कर रहे हो, लंबी चौड़ी बात कर रहे हो आप, नेविगेटर जैसा। मैं कह रहा हूँ बच्चे को बताओ कि ये क्या कहना चाह रहा है। एट द सर पोल, पोल के ऊपर सर, जस्ट पोल के ऊपर। हाँ सर पोल के ऊपर। ऊपर तो है, लेकिन ये सेलेस्टियल नॉर्थ जैसी चीज क्या बता रहे हैं? वो स्टार को इमेजिन किया कोई। वर्टिकल है, सर सेलेस्टियल बॉडी को। कुछ नहीं, पोल पे है और वर्टिकल है, Starboard. स्पिन एक्सिस, सिंपल। नहीं, वर्टिकल होएगा तो सीधा सेलेस्टियल नॉर्थ को देखेगा कि नहीं? नहीं, यस सर। exactly. So it is just saying that at poles with the spin axis vertical there will be no tilting, no drifting. वो वहीं पे जायरो स्टार ऊपर की तरफ, नॉर्थ स्टार की तरफ है, वहीं पे टिका रहेगा। नीचे अर्थ घूमती रहेगी और वो नहीं घूमेगा। ऑलराइट,
ठीक है। नेक्स्ट, हमने देखा था वहां पे 15 डिग्रीज लिख रहे थे, यहाँ पे 15 डिग्रीज दिख रहा है आपको, मिनट्स दिख रहा है? मिनट्स है सर। मिनट्स, ऐसा क्यों? वो पर मिनट है ना। यस, वो पर आवर था, ये पर मिनट है। दैट्स सेम मोशन, 15 डिग्रीज पर आवर और 15 मिनट्स पर मिनट ऑफ टाइम। So there were two things happening in the free gyroscope, which is explained like this, where there is tilting and drifting only. As you can see here, it is defined by this. Initially जब horizontal है तो ड्रिफ्टिंग होनी शुरू होती है, ड्रिफ्टिंग के साथ टिल्टिंग भी शुरू होती है। एक टाइम के बाद ड्रिफ्टिंग रुक जाती है 6 घंटे बाद, और टिल्टिंग होना कंटिन्यू रहता है। फिर वापस आता है जिसमें टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग दोनों हो रही है। अगले 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद ड्रिफ्टिंग उल्टा होता है, टिल्टिंग खत्म हो जाती है, वर्टिकल हो चुका, 90 डिग्री पे आ चुका वो, और वही साइकिल 24 घंटे में चलती रहती है। एवरी 24 आवर्स, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे में स्पिन एक्सिस क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करता है। Remember that we are talking about 24 hours, 24 hours, 24 hours all the time, but actually it is happening in one sidereal day, which is 23 hours, 56 minutes, 4.09 seconds. Are we good? Clear है या नहीं है? Yes. Okay, so sign convention आपको मालूम ही है, this is the sign convention. हम लोग थोड़ा 2 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद आ जाएंगे क्लास में। We'll continue from here. This will happen in North Hemisphere. नहीं, okay. ये क्या कर दिया? This and this will happen in North Hemisphere. This and this will happen in South Hemisphere. So this is the topic that we'll be discussing once we return back in the class. अगली क्लास भी हमारी है, तो जो अभी बताया था उसको हम फिर से बात करेंगे, और we'll see it on the slides. जो भी हमने पढ़ा है वही चीज है, ब्लैक एंड व्हाइट में एक बार देख लेंगे। Alright, so take a break, come back after 15 minutes. So 20 हो चुका है, तो 20 + 15 कितना होगा? 35। 11:35 पे मिलते हैं। 12:30। Okay, sir. Okay, sir. 11:35 पे मिलते हैं। ओके, बाय बाय। Bye, sir. साइनिंग ऑफ।